Welcome to Scholar Study Magic. ଆମେ law of conservation of linear momentum ସରି ଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା କରିବା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 1 ହେଉଛି a car of mass 1000 kg traveling at 32 meter per second dashes into a rear of truck of mass 8000 kg moving in same direction with a velocity of 4 meter per second. After collision, the car bounces a velocity of 8 meter per second. What is the velocity of the truck after impact? तो हम सॉल्यूशन करिबा एक कार तो एटा गोटे बॉडी एटा कार सपोज एटा गोटे ट्रक तो ट्रक कार जाउची कार रो मास होउची हमरो 1000 केजी ट्रक रो मास होउची 8000 केजी ओके कार जाउची केते स्पीड रे ना 32 u इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू हमरो 32 मीटर पर सेकंड ट्रक जाउची 4 मीटर पर सेकंड u1 एटा u2 ट्रक वाला 4 मीटर पर सेकंड ये m1 ये हो m2 ओके तो से कौन करछि जेहेतु कार जाउची 32 मीटर पर सेकंड तो u1 ग्रेटर देन u2 तो ट्रक सहित धक्का देछि धक्का देला पर कौन होछि जेहेतु ट्रक 8000 केजी कार कौन करछि बाउंस करछि माने पछकु रिबाउंड करछि ये पछकु आछेरी केते u2 वेलोसिटी आछि केते 8 मीटर पर सेकंड जेहेतु पछकु जाइछि तो -8 मीटर पर सेकंड हबो u2 न हां u v1 तो हमको बाहर करिया ट्रक रो वेलोसिटी v2 बाहर करिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अनुसार m1 u1 दीटा कर कार रो इनिशियल कार रो मोमेंटम प्लस ट्रक रो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डायरेक्ट से फार्मूला पकि बाहर करिवो तो कौन कौन देश देखिबा given that m1 mass of car m1 1000 kg mass of truck m2 8000 kg लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार u1 इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड ये भली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक u2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आफ्टर collision final velocity of car v1 is equal to -8 मीटर पर सेकंड हमको बाहर करिया कोन फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक v2 is equal to लिखिबा by law of conservation of linear momentum कौन था law of conservation initial momentum before collision is equal to initial momentum after collision initial momentum
of car and truck is equal to final momentum of car and truck. So this implies that initial momentum कहते हैं तो m1 u1 प्लस m2 u2 एटा हला कार मोमेंटम इनिशियल एटा हला ट्रक मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 एटा हला कार फाइनल मोमेंटम कार ट्रक रेटा फाइनल मोमेंटम आमको बाहर कर v2 तो बाहर कर दिया पकई दियो m1 हूँ केते m1 हूँ कार मास 1000 kg u थिला 32 प्लस यूनिट पछ लिख m2 है 1000 इंटू u2 है 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कार मास 1000 इंटू कार फाइनल वेलोसिटी अच्छी -8 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 हूँ 8000 इंटू v2 ओके तो ये है 32,000 प्लस 32,000 इज इक्वल टू -8,000 प्लस 8,000 v2 एटा एपट गाण हरी 32 है 64,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 8,000 v2 एटा 64 प्लस 80 72,000 is equal to 8,000 v2. This implies that v2 is equal to 72,000 by 8,000. That's like 9 मीटर पर सेकेंड तो v2 है ट्रक फाइनल वेलोसिटी जो प्लस आसी ट्रक टी आगु जोर ये बाउंस करके आसला ट्रक टी किंतु 4 मीटर पर सेकेंड जाउतला जेतेबेले कल ट्रक टी केते जाउतला 4 मीटर पर सेकेंड जाउतला जेतेबेले कोलाइड करिवो तो कार बाउंस करियो 4 मीटर पर सेकेंड बट ये आउ स्पीड ता बढ़ जो केते 9 मीटर पर सेकेंड रे तो इसका प्रॉब्लम 1 सर जाइए तो आम जो प्रॉब्लम नंबर 2 तो प्रॉब्लम 2 को जीवा अच्छा प्रॉब्लम 2 गोटे करबा होची ए 30 kg सेल ए 30 kg cell is flying at 48 meter per second. When it explodes, its one part of 18 kg stops while the remaining part flies on. Find the velocity of latter. Find the velocity of latter. Okay. तो जीवा गोटे 30 kg सेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड तो से एक्सप्लोड कर देछि तार वन पार्ट गोटे पार्ट 18 kg स्टॉप्स रही जाला
सी कंटिन्यू 30 के सेलिंग 48 मीटर पर सेकेंड रे जाउची तो ये एक्सप्लोर कला पर गोटे पार्ट जाउची 18 के तार मास जे स्टॉप्स रही जाइछि तेणु तार फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाइछि इनिशियल वेलोसिटी जेहेतु सेलटा फ्लाइंग करूची 48 मीटर पर सेकेंड तो तार इनिशियल वेलोसिटी 48 मीटर पर सेकेंड जो स्टॉप हो जाइछि तार इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाइछि बट रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन किंतु रिमेनिंग पार्टी उड़ी चली तार से तो फाइंड द वेलोसिटी लेटर तार वेलोसिटी बाहर करवा तो लिखा सॉल्यूशन कौन कौन देछि अच्छा देछि सेल रो मास तार दुईटा पार्ट अच्छी लिख मास ऑफ द सेल तो एम हो के कैपिटल एम हो 30 kg अच्छा वेलोसिटी लिख वेलोसिटी ऑफ द सेल u 48 मीटर पर सेकेंड अच्छा तापर है से एक्सप्लोड करुच्ची आफ्टर एक्सप्लोजन मास ऑफ दुईटा मास रो पार्ट करा मास ऑफ फास्ट पार्ट धर m1 केते 18 kg तो ये दुईटा को पार्ट भितर देखा गोटे वस्तु गोटे बॉडी m1 गोटे m2 तो दुईटा पार्ट्स तार मास इनिशियल वेलोसिटी तार फाइनल वेलोसिटी दुईटा पार्ट बाहर करे तार कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पकया तो m1 है 18 kg अच्छा तार वेलोसिटी v1 केते फास्ट पार्ट रो वेलोसिटी v1 होची केते सॉरी मास होची m1 तो u तो है समस्त u तो है दुईटा इनिशियल वेलोसिटी ठीक अच्छे u1 लिखी दियो केते से 48 मीटर पर सेकेंड जेहेतु वेलोसिटी ऑफ द सेल u तो दुईटा पार्ट रो भी इनिशियल वेलोसिटी एति अच्छा अच्छा तो v1 केते v1 होची फास्ट पार्ट रो जिते माड़ हो जाए फास्ट पार्टी रही जाए तो v1 टा हूँ 0 सेमती लिखा मास ऑफ सेकेंड पार्ट टोटाल सेल रो मास हूँ 30 kg फास्ट पार्ट रो मास हूँ 18 kg सेकेंड पार्ट रो मास केते हम 30 माइनस 18 इज इक्वाल टू 12 kg अर्थात m2 इज इक्वाल टू 12 kg तो आमको बाहर करार अच्छी v2 अच्छा u2 केते u2 होची केते तार इनिशियल वेलोसिटी केते सही 48 मीटर पर सेकेंड जेतु सेलटा जाउची ना तो तार दुईटा पार्ट भी ता सहित चली तमने u1 u2 सेम अच्छे दु जन जाकर कि जो कॉलेज होती से एक्सप्लोर कर देती तो फास्ट पार्टी इन फाइनल वेलोसिटी 0 रही जाए सेकेंड पार्टी भी जाइए तो v2 हमको बाहर कर लिख बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 अच्छा m1 u1 m1 कहले फास्ट पार्ट रो मास 18 फास्ट पार्ट रो वेलोसिटी 48 m2 कहले सेकेंड पार्ट रो मास 12 तार इनिशियल वेलोसिटी भी 48 m1 कहले केते फास्ट रो 18 इंटू 0 प्लस m2 कहले केते 12 इंटू v2 होची बाहर करिया ओके देख ये देख दुईटा 48 अच्छी 48 कमन नहीं जाटा 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गला ये है 12 v2 18 प्लस 12 30 इंटू 48 30 इंटू 48
आमर आसीबो 30 into 48 is equal to 12 V2। तापर देख तो V2 केते हबो 30 into 48 by 12 12 48 कटि जीवो 4 आसीबो is equal to हमरो 120 मीटर पर सेकेंड। तार सेकेंड पार्टी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लेटर तार सेकेंड पार्ट रो वेलोसिटी आसीबो केते 120 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड रे चलिबो। तो वर्तमान जीवा सर जाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विषय सर जाइए। तो वर्तमान जीवा आम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक होची इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces। इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces कौन मन रख जिते बड़े गोटे गोटे बॉडी अच्छी तो बॉडीर कौन सी जेकोसी गोटे पॉइंट रे जिते सब फोर्स एक्ट करेंगे जदि से सम ऑफ टोटल फोर्स इज 0 दैट इज कॉल्ड एज ए फोर्स और सब concurrent forces और इज सेड टू बी बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी बॉडी ऊपर जब चारियाडू फोर्स एक्ट करुवे आ सब जगार नेट फोर्स हो 0 से से बॉडीटा कहवा इक्विलिब्रियम कंडीशन अच्छी आ से फोर्स गुड़ा हूँ concurrent forces। तो लिखिबा when force no different forces when forces acting at the same point कोथरे on a body are called concurrent forces। concurrent forces जो फोर्स गुड़िक गोटे पॉइंट रे गोटे बॉडी जेकोसी गोटे पॉइंट रे एक्टिंग करुवे से फोर्स गुड़ा कहती concurrent forces। बा आउ कौन करि परिबा when number of forces when number of forces act on a body at a same time act on a body at a same time sorry when a number of forces act in a body at a same point गोटे पॉइंट रे एक्ट करेंगे and the net unbalanced forces is केते हबो 0 जिते एक्ट करते बॉडी ऊपर तो अनबैलेंस नेट अनबैलेंस फोर्स इज 0 at that time the body से समय कौन कर द बॉडी जदि रेस्ट अवस्था थी से सेमती रेस्ट थी जदि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन रे गति कर से यूनिफॉर्म मोशन रहा कारण तार चारियाड जो concurrent फोर्सेस गुड़ा एक्ट करती सेटा 0 थी एट द टाइम द बॉडी विल कंटिन्यू in its state of rest or uniform motion along a straight line and
the body is said to be in equilibrium. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡି ଉପରେ କୌଣସି ନମ୍ବର ଅଫ ଫୋର୍सेस କୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ନେଟ୍ ଅନବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ 0 ଥିବ। at that time the body will continue। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ିଟା ଯଦି ରେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତ ରେଷ୍ଟରେ ଥିବ, ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନରେ ଥିବ ସେ ସେମିତି ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନରେ ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବଡି କହିବା ଦି ବଡି ଇଜ ସେଟ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ତାମାନେ ତାର ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ନେଟ୍ ଅନବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଇଜ 0। ତାପରେ ଯେତେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତେ ବି ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ତାର ନେଟ୍ ଅନବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ 0। ତ ଆମେ ତାପରେ ଡେରିଭେସନ୍ କରିବା, ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ଏଟାକୁ। ଓକେ, ଡେରିଭେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସବୁ କରିବ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି ପାଠ। ଡେରିଭେସନ୍ କରିବା, ଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ସପୋଜ୍ ନେବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନେବା, ବଡି ନେବା, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୋର୍ସ ପକାଇବା, ଯାହାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୋର୍ସ ଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଲେଖିବା, ସେମିତି ଲେଖ। let us consider 3 forces। ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା କରିଦେବ, ତାପରେ କରିବା। ଧର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ 3 ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆକ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆକ୍ଟ କରୁଛି। ସପୋଜ ଏଇଟା ହଉ F1, ଏଇଟା ହଉ F2। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉ F3। let us consider 3 forces acting। ନା ଦେଇଦିଅ 3 forces ନା F1, F2 and F3 acting at a same point O F1, F2 and F3 acting at a same point O। ଧର ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ହଉ O of a body act କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଇଏ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଏଇ ଫୋର୍ସ ବି ଆକ୍ଟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସଟା, ଧର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଇଏ ଟାଣୁଛି, ଇଏ ଟାଣୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଫୋର୍ସ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଣୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ମୋଡ୍ ଫୋର୍ସ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ଫୋର୍ସେସ୍ ଯଦି ଆ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ିଟି, ସେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟି ଉପରେ କନକରେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ତାପରେ ସେ ବଡ଼ିଟି କ'ଣ ହେବ ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଫୋର୍ସ 10 ନ୍ୟୁଟନ୍, ଆର ମାନଙ୍କର 5 ନ୍ୟୁଟନ୍ ହୁଏ 15, ଇଏ ଯଦି 10 ନ୍ୟୁଟନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ପଡ଼ଟା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ 10, 5 ଆର ତ ଭେକ୍ଟର ଆଡ଼ିସନ୍ ତ ସେମିତି ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ଫୋର୍ସଟା କୁଆଡ଼େ ହେବ? ଏଇ ଦିଗରେ ଯିବ। କେମିତି ଯିବ ନା ବାଇ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲରେ ଜାଣିଛ, ଆର ନେଟ୍ ଫୋର୍ସଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଗୋଟେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ ଭେକ୍ଟର ଆଡ଼ିସନ୍ ରେ ପଡ଼ିଥିବ, जो डायगोनालटा हम पारालेलोग्राम डायगोनालटा एटा हमर आसीबो नेट फोर्स आर पॉइंट केते गोटा रिजल्टेंट आर तो अब हमर F1 प्लस F2 ये को दियो ए फोर्स आउ एटा तार विपरीत दिगरे आसीबो ये फोर्सटा एपट आनी एपट जीवो तेणु तार विपरीत दिगरे जदि सेम फोर्स हो F3 आर सम सहित यदि सामान हम ताले आम जाना जे ये जो ओ पॉइंट रे जो बॉडी ओ पॉइंट से बॉडीटा सेड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन से लिखिबा बाय parallelogram law of vector addition the resultant of F1 and F2 is equal to केते हबो F1 plus F2
इफ जदि एटा रिजल्टेंट इफ जदि एयर फोर्स सहित एयर फोर्स समान हो गला ताहले आम कहबा से बॉडी डिसाइड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ओके तो इफ द थर्ड फोर्स सपोज थर्ड फोर्स हो हमर एफ वेक्टर चिन्ह दब F3 acts on the body okay such that एमिति एक्ट करिवो जेपरि कि F3 is equal to F1 plus F2 माइनस चिन्ह नेगेटिव रे इंडिकेट करिवो देन द body will be in equilibrium that means F3 is equal to eta हेजिबो F1 minus F2 this simply that F2 सब अनहरी F1 plus F2 plus F3 is equal to 0 तार कौन लिखा thus the condition for equilibrium of number of forces the condition for equilibrium of number of forces acting at a same point acting at a same point is कौन हबो ना that vector sum of forces is 0 टे कंजेस्टेड कर लिखिदेली लिखिदेव सहित आमर इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट फोर्सेस टॉपिक सर जाइए आम जा बर्तमान नेक्स्ट टॉपिक की CHSE सिलेबस अनुसार तार नेक्स्ट टॉपिक जा फ्रिक्शन विषय को जा चैप्टर आमर फ्रिक्शन विषय जा तो फ्रिक्शन विषय आम पढ़ा 1 रे पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन नंबर 2 रे पढ़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन नंबर 3 रे पढ़ा काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पढ़ा पूर्व प्रथम देख फ्रिक्शन कौन आमर हेडलाइन द फ्रिक्शन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन हूँ मन रख जोटा ओडिया पढ़ी घर्षण बल सपोज ये गोटे वस्तुटे बॉडीटे तुम साइकिल चलाच गाड़ी चलाच जाऊँगी तो अप्लाइड फोर्स धर P अप्लाइड फोर्स ये दिगरे जाऊँगी अप्लाइड फोर्स F नि जाए बट जो फ्रिक्शनल फोर्स भी F हो जाऊँगी ये भी F हो जाऊँगी तो अप्लाइड फोर्स टाक सपोज नहीं गले P नहीं गल ये दिगरे तुम जाऊच देख जदि स्टार्ट बंद करदेल साइकिल जाऊँ पेडालिंग बंद करदेल कि बाट गलापर ये ऑटोमेटिक स्थिर हो कहीं ना यही वस्तु को यही बॉडी की तार बैकवर्ड रे गोटे फोर्स एक्ट करा फ्रिक्शनल फोर्स तो घर्षण बल है तो यहाँ है अप्लाइड फोर्स यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल ओके तार घर्षण बल सब पछ को एक्ट करता है टाणी थाए आमर अप्लाइड फोर्स रो अपोजिट डायरेक्शन रे घर्षण बलटा एक्ट करे तो फ्रिक्शन ताले कौन करवा लिखा डेफिनेशन व्हेन कौन करे
when a body moves over the surface of another body ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ତାହେଲେ ସେ ଫ୍ରିକ୍ସନଟା କାହାର ଅଛି ସପୋଜ ଏଟା ରାସ୍ତାଟା ୱେଟା ଏଇଥିରେ ତମେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଯେଉଁ ପଛକୁ ଆକ୍ଟ କରୁଛି କିଏ ଟାଣୁଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଏଟା ଖତଗଡ଼ା ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ତମେ ସେ ପେଡାଲ ମାରିଲା ପରେ କମ୍ ବାଟ ଯିବ ଯଦି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଟ ଯିବ ଯଦି ପୁରା ଚିକଣ ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯିବ ତାମାନେ ଚିକଣ ରାସ୍ତାରେ ଫ୍ରିକ୍ସନଟା କମ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଫୋର୍ସଟା କିଏ ଦେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ଏ ରୋଡ଼ ଦେଉଛି ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଫେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବଡି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡିର ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚାଲେ ତ ଦୁଇଟା ସରଫେସ୍ ହେଉଛି ତ ସେ ଦୁଇଟା ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଚଳେ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ହୁଏନି ବଡି ମୁଭ୍ସ ଓଭର ଦ ସରଫେସ୍ ଅଫ୍ ଆନାଦର ବଡି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ଉପରେ ସେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରୁଛି କାହା ସହିତ ତ ଆମ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରୁଛି ये जो दिगरे ए दिगरे किंतु पैरेलल समांतर एक फोर्स एक्ट कर अपोजिंग डायरेक्शन आउ ये अपोजिंग फोर्सटा कहते फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेशन लेख सो राइट डाउन कौन व्हेन ए बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ another body when a body moves over the surface of another body सेतेବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି a force act ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି force acts କୋଉଠି act କରେ parallel to the surface of contact जोटी contact होची से जगह गोटे act करे पुणी कोठी and opposes आ से कौन करे आम apply force को oppose करे this opposing force is called friction तो फ्रिक्शन जो पढ़िया से तीन प्रकार फ्रिक्शन पड़ा गोटे स्टैटिक फ्रिक्शन गोटे लिमिटिंग फ्रिक्शन गोटे काइनेटिक फ्रिक्शन ओके तो फास्ट पढ़िया कौन स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कौन देख तो यहाँ गोटे वस्तु यहाँ धर गोटे बोलवा गोटे अदर पृष्ठ ये है बॉडी टच कांटेक्ट जोटा ये बॉडी यहाँ है आउ गोटे अनादर बॉडी तो ये जिते फोर्स दबा फास्ट अल्प फोर्स दबा ये जीवन जेहेतु फ्रिक्शनटा बैकवर्ड डायरेक्शन जाऊँगी तो ये जिते पर्यंत आम फोर्स अप्लाई करुवा अप्लाई फोर्स करुवा बट जेपर्यंत ये वस्तुटी रेस्ट कंडीशन रहा जीवनी जो चिकण हो पड़े तेणु चिकण हाँपाई बेले बेले आम गाड़ी सब चक लगेद गोटे बड़ गोटे वस्तु को टाणवा चक हुईल लगेद शीघ्र पड़े तो सीटा जीवहरी कथा नुह जेपर्यंत से जाई नथिबो सेमती रेस्ट बसथिबो आम टाणुवा फोर्स दउथवा किंतु वस्तुटी मोशन अवस्था नथिबो कारण फोर्स देला परे भी ये पछू गोटे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करुथबो आम जदि मनकर 10 न्यूटन फोर्स दउचे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जदि 20 न्यूटन थिबो ताले वस्तु केबे जीवनी तेणु आम फ्रिक्शन फोर्स टू जदि अप्लाई फोर्सटा अधिक हैला ताले वस्तुटी बॉडीटी कौन कि आगू गति करिवो कि जेपर्यंत फ्रिक्शन फोर्स टू कम होतिबो से पर्यंत से जाउ नथिबो आ सेतिकी पर्यंत समय होची से जो फ्रिक्शन फोर्सटा कय आमे स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक अर्थ होची कोन रेस्ट स्थिर बॉडी मूव करिवो नाही सेते बेला स्टैटिक फ्रिक्शन ओके तापरे लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन तो जीव 20 न्यूटन अच्छे आम 10 न्यूटन प्रयोग कले आउ जन आसो आउ 10 न्यूटन आउ 8 न्यूटन 9 न्यूटन तो 20 न्यूटन पाखापाखि जिते हो 20 न्यूटन है सेम टू सेम हो 20 न्यूटन जिते आउ टिके अधिक पकईदेवा जिते मोशन करा जस्ट स्टार्ट कर तो सेते से फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन
अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन जितेबाला तार मैक्सिमम लेवल को पहुँचीब आउ स्टैटिक फ्रिक्शन से काम करें तापर आस काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन जिते क्रॉस करदेव से वस्तुटी बटी कौन हम मोशन अवस्था को आसो चलो अर्थात 20 न्यूटन प्लस हो वस्तुटी मोशन करिया स्टार्ट करियो मोशन कला पर भी से बॉडी उपरे फ्रिक्शन बोर्ड काम करदो से जो फ्रिक्शन एक्ट कर आम काइनेटिक फ्रिक्शन माने वस्तु जो मोशन कला समय से समय जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करे काइनेटिक फ्रिक्शन जदि वस्तु अप्लाई फोर्स दौथुआ किंतु वस्तुटी मूव कर नता से स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन सहित ये फ्रिक्शन आम सामान हो जस्ट मूव करिया स्टार्ट करियो से लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिट माने सीमा स्टैटिक फ्रिक्शन रो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम भर आसीबो काइनेटिक फ्रिक्शन से मैक्सिमम वैल्यूटा हला हमर लिमिटिंग फ्रिक्शन तो डेफिनेशन लिखि दबा स्टैटिक फ्रिक्शन the force of friction which acts the force of friction which acts between two bodies okay तो between two bodies ऊपर act करे before one body actually starts moving over the other is called static friction जितने अन्य ऊपर जाउतिबो एवं which acts between two bodies before one body actually start moving over other मूविंग करिया पूर्वरु आ ऊपर मूविंग करिया पूर्वरु जो फोर्सटा तापर एक्ट करथाए सेटा कहंती स्टैटिक फ्रिक्शन आकु आमे फोर्स अप्लाई कले से किंतु फोर्सटी वस्तुटी मूविंग कर मूविंग जेतबेले करियो मूविंग करिया पूर्वरु सेही बॉडी ऊपर जो फोर्स अपोजिंग फोर्स एक्ट करे that is called as static friction friction is a opposing force oppose force okay अच्छा आकु तापर कोन करिया सेकंड पॉइंट लिखिया स्टैटिक फ्रिक्शन के डेनोट करा जाए ना इट इज डेनोटेड बाय fs फ्रिक्शन s अच्छा ए स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम केतल हबो जेतले स्टैटिक फ्रिक्शन एंड हेबो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज मैक्सिमम माने स्टैटिक फ्रिक्शन टा मैक्सिमम जेतले हबो केतले हबो ना व्हेन ए बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव जिते मूव करिया को जस्ट स्टार्ट करिवो सेते बेले हम स्टार्ट कोडी मूविंग ओवर द अदर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी जिते आउ गोटे बॉडी ऊपर स्टार्ट करिया को मूविंग करिया को स्टार्ट करिवो तो सही समय हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम हम रेस्ट अच्छी आम बल फोर्स अप्लाई कर जाऊनी से समय स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छी जाऊनी जाऊनी आहरी फोर्स बढ़े आहरी फोर्स बढ़े जिते स्टार्ट करने को आरंभ कर तो सही समय कहते लिमिटिंग फ्रिक्शन होची मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जिते मूविंग करदे से को फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन तो सपोज देख एटा गोटे बॉडी एटा गोटे अनदर सरफेस ऊपर जाउची तो इयाडा हमर अप्लाइड फोर्स एक्ट कले ओके तो ये वेलोसिटी ए दिगरे हमर एक्ट करछि तो स्टैटिक फ्रिक्शन को दिगरे एक्ट करो ए दिगरे जानिबो एफएस
ओके ये ए दिगरे एक्ट करिवो एटा हला स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट आम जी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन लिमिटिंग फ्रिक्शन देखी दिया आग लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड कौन limiting friction okay it is denoted by fs maximum बा लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम पॉइंट आसे लिमिटिंग फ्रिक्शन एमती डेनोट करा जाए तापर जे हमर काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कहली जेतले वस्तुटी मूव करबा आरंभ करे सेते बेले हला काइनेटिक फ्रिक्शन लिखबा कौन लिखबा द फ्रिक्शन acts when a body is in a state of steady motion is called kinetic friction okay it is denoted as कोथरे फ्रिक्शन के स्टैटिक फ्रिक्शन fs लिमिटिंग फ्रिक्शन fs मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन f के ओके अच्छा आ गोटे ये कहीपर यहाँ वस्तुटा ओके ये आम अप्लाइंग फोर्स देले जदि वस्तुटा गड़िला के ये गोटे फ्रिक्शन फोर्स कर सब बेले यहाँ मनकर एफ के यहाँ पी सदा मन रखी ये पीटा जदि एफ के टू बड़ है धर ये है 10 न्यूटन आम अप्लाय कले ये जदि है 5 न्यूटन तर ये मन कर 15 न्यूटन ताले आम जो फ्रिक्शन टा करे फ्रिक्शन बलटा 15 न्यूटन है केते कह को फ्रिक्शन कह स्टैटिक फ्रिक्शन जे 10 को 10 हो गला ताले कह लिमिटिंग फ्रिक्शन जदि ये 5 हो गला ये 10 हो गला हम कह काइनेटिक फ्रिक्शन से वस्तुटी मूविंग कर आरंभ कर तमें केते वस्तुटा मूविंग कर काइनेटिक फ्रिक्शन कौन हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सटा ऑलवेज लेस दैन अप्लाइड फोर्स बुझला तमें कौन करिया इफ एफ इज इक्वल टू एफ के जदि अप्लाइड फोर्स पी धर पी इज इक्वल टू एफ के जदि अप्लाइड फोर्सटा काइनेटिक फ्रिक्शन सहित समान हो गला एफ के देन द बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी ओके तमें ग्राफ बने धर सपोज ग्राफ करबा धर एपटे आमर रोची अप्लाइड फोर्स ओके तो एपटे हूँ मानकर फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन ओके तो ये देखिए तो जिते जीरो अच्छी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन मान जो फ्रिक्शन हूँ जीरो तो फोर्स आम अप्लाइड फोर्स बढ़ेबा जेपर्यंत वस्तुटी धर फोर्स जिते बढ़ुव ये भी से बढ़ुव जेपर्यंत बॉडी मूव करनी से पर्यंत स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ी 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 चलती ये 1 है ये 1 ये 2 है ये 2 ये 3 है ये 3 तो एमती बढ़ी 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 चलती
तो यही जगह मनकर 4 हेले ये 4 तो एमती चलला बढ़ी बढ़ी चलला जे पर्यंत अप्लाइड फोर्स बढ़ुव स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ी बढ़ी चलते जो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड मैक्सिमम एठू बॉडी स्टार्ट करने को आरंभ कर अप्लाइड फोर्स जिते बढ़ ये फ्रिक्शन फोर्स एठू कमी कमी आसो एमती आसो ठीक कमी कमी चलला तो यू एत गला आमर कहती एफ एस अप्लाइड फोर्स जिते बढ़ुव स्टैटिक फ्रिक्शन से बढ़ुव कारण वस्तुटा मुव करूनी जिते बढ़े बढ़े चलुचे से बढ़ी बढ़ी चलुचे एठू कौन होटू कमुची ये बॉडी जस्ट स्लाइडिंग टू मूव ये मूव करने जस्ट स्टार्ट करुच्ची तो यहाँ है आमर लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ये जिते अप्लाइड फोर्स बढ़ा से ये कमी कमी जाऊँगी तो यहाँ है आमर एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ हूँ कौन ग्राफ हूँ कौन ना वेरियस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विथ अप्लाइड फोर्स सहित फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वेरियस हो विभिन्न प्रकार वेरियस फोर्स धर फ्रिक्शन फोर्स हो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन आउ काइनेटिक फ्रिक्शन ओके आज सरला वर्तमान आम जा लॉज ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट टॉपिक हो लॉज ऑफ फ्रिक्शन कौन फ्रिक्शन किसी नियम अच्छी फास्ट लॉ हूँ कौन द लिमिटिंग फ्रिक्शन टा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन केतबेले वस्तुटा स्टार्ट करिवो तो सरफेस कांटेक्ट ऊपर नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट जो एटा वस्तुटा अच्छी कांटेक्ट देखा पड़ो रफ सरफेस अच्छी कि स्मूथ सरफेस अच्छी कि ऑयलिंग सरफेस अच्छी तो ताऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड कर ऑयलिंग सरफेस अच्छी लिमिटिंग फ्रिक्शन टा शीघ्र कौन हो स्टार्ट हो बंद हो तो कौन हम ताले देख लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स on the nature of the surface in contact okay second how limiting friction acts tangential to the two surface in contact and direction opposite to the motion of the body ये एक्ट रे कहना टेंजेंशियल कौन करिया देखिबा लिमिटिंग फ्रिक्शन acts tangential to the two surface in contact and in the direction opposite to the direction of motion of the body माने बॉडीटा जो दिगरे जाऊँ तार अपोजिट दिगरे ये अप्रोच फ्रिक्शन तो अपोजिट लिमिटिंग फ्रिक्शन हो स्टैटिक फ्रिक्शन हो काइनेटिक फ्रिक्शन हो सब जो दिगरे जो डायरेक्शन रे बॉडी जाऊँ तार अपोजिट डायरेक्शन ही जीव तापर आउ गोटे पॉइंट हूँ लॉज ऑफ मोशन रो आउ गोटे लॉ हूँ द लिमिटिंग फ्रिक्शन ओके the limiting friction denoted as fx maximum is directly proportional to क्या सहित नॉर्मल रिएक्शन एटा गोटे लॉ मन नॉर्मल रिएक्शन आर कहार नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन
टू सरफेस एटा यदि बॉडी हुए एटा यदि सरफेस हुए ये गोटे सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कोटा जो को लंब भाव में एक्ट कहते आर तो आ सहित लिमिटिंग कोड़ा लेफ्ट को ये आ सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जिते नॉर्मल रिएक्शन बढ़िबो से लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़िबो यदि नॉर्मल रिएक्शन कमिला लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कौन हम कमिबो ओके अच्छा दैट मीन्स कौन ता माने कौन पाइबा लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम को होजी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर ओके दिस सिंपल दैट अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टा चिन्ह उठा गले कौन करिया गोटे कांस्टेंट टर्म यूज करिया एफएक्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस जब स्टैटिक फ्रिक्शन कर होची म्यू एस आर हियर म्यू एस कौन एटा होची प्रोपोर्शनैलिटी constant and is called coefficient of static friction coefficient of static friction ओके तो बाहर कर दिस सिंपल दैट म्यू एस केते म्यू एस एफएक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय आर ओके माने लिखिबू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड as कौन कहले the ratio of limiting friction and normal reaction लेखो write down as the ratio of limiting friction and normal reaction okay अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन गला लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन तार पड़े लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सब जगह लिखा होची सेमती काइनेटिक फ्रिक्शन तीन टा पॉइंट कर देबा सेमती से जा द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज independent of the area of contact the independent of कौन area of contact okay so long as the normal reaction remains same the normal reaction remain same ये एरिया ऑफ कांटेक्ट सहित इंडिपेंडेंट करे नहीं कारण ये थरे स्टार्ट चलला माने या एरिया ऑफ कांटेक्ट ऊपर डिपेंड करे नहीं हला सो लॉन्ग से पर्यंत द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम जेतेबेले ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जेपर्यंत सेम थिबो से पर्यंत ये एरिया ऊपर केबे डिपेंड करे नहीं ओके आउ कहा पे डिपेंड करे नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन doesn't depend on velocity केते स्पीड रे जाउची ता ऊपर ये डिपेंड करे नाही प्रोवाइडेड द वेलोसिटी से जेते स्पीड गले भी तार काइनेटिक फ्रिक्शन सेम आसीयो प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इज neither too large nor too small से लार्ज हो बा स्मॉल हो कहा ऊपर
डिपेंड करना वेलोसिटी स्पीड गले काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करुच्ची स्मॉल गले भी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करुच्ची। अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन रो लास्ट पॉइंट देखिबा लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रो से जेमती से लिखिया जेमती लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन ये मध्य तो डिपेंड करुच्ची डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk is directly proportional to कहाँ पर है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर बिटवीन टू सरफेस दैट मीन्स कौन पाइबा एंत पाइबा दिस इम्प्लाय दैट एटा को प्रोपोर्शनल टा उठेले कौन हम इज इक्वल टू म्यू के आर एटी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हियर म्यू के इज इक्वल टू कौन proportionality constant and it is called mu k is called coefficient of kinetic friction। अच्छा ये म्यू के टा बाहर करो म्यू के केते हबो एफ के बाय आर तमना तो लिखि दियो म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाय आर एटा काइनेटिक फ्रिक्शन एटा हला नॉर्मल रिएक्शन ओके एटा हला कोन काइनेटिक फ्रिक्शन बाय normal reaction that means so coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of kinetic friction and normal reaction so the फ्रिक्शन रो सरला लॉज ऑफ फ्रिक्शन जानले आउ लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नेक्स्ट क्लास रे करिबा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज ला तापरे पड़िबा हमर रोलिंग फ्रिक्शन जिबा तापरे लुब्रिकेशन तापरे किसी प्रॉब्लम सहित जिबा सेंट्रीपिटल फोर्स तो आज पई एतिकी तो नेक्स्ट पार्ट रे देखा हबो।